Assalamu alaikum dear students. I am Mansoor Ali, lecturer of mathematics, Army Public Degree College, Marikand. Today I'll teach about exercise 2.3, question number 1 to question number 8. So if you are just giving the attention of this lecture, then definitely you will able to solve question number 1 to question number 8. And if you don't pay the attention, then you will get this kind of picture, although there is a funny side. But why I put this picture? Because it shows that if you don't pay attention in the class, so all the things goes wrong. Okay, so please pay attention to this lecture, so you will be able to solve exercise 2.3, question number 1 to question number 8. First of all, I'm just defining some rules of derivative. First rule is simple power rule. And how can I define that? First you just put the power in the at the coefficient, then decrease the power of the function and derivative of under the power. Now अब इसको थोड़ा सा बाइलिंगुअल भी करते हैं ताकि समझ में आ जाए और अच्छा ना। x की पावर अगर n है, एक पावर n है, तो क्या काम है ना, पावर को उतारना। तीन काम करने, कितने काम करने, तीन काम। पावर को उतारना है, ये पावर को उतार दिया, कोफिशिएंट बना दिया, एंड पावर में से एक कम कर दिया, ये दूसरा काम कर दिया, एंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर, ऑल्दो के डेरिवेटिव अंडर द पावर 1 होता है, जो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। सो तीन काम यहाँ पे करने। सिंपल पावर रूल कंसिस्ट 3 वर्क। फर्स्ट यू हैव टू पुट द पावर एज द कोफिशिएंट and then decrease the power from the function and then taking derivative of under the power. Now second rule is constant multiple rule. Constant multiple rule means if anything is constant like c, so constant should be outside from the operator. This is called operator. Okay, this is called operator. So constant or coefficient should be outside from the operator as we did it in limits. Now sum and difference rule, that how we can do the difference and sum. Simple, अगर प्लस होगा तो ऑपरेटर दोनों पे लग जाएगा, ठीक है। इफ वी हैव माइनस साइन, ऑपरेटर दोनों पे लग जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगी। मीन्स ऑपरेटर शुड बी ऑन द बोथ टर्म्स, शुड अप्लाई ऑन द बोथ टर्म्स। यस, प्रोडक्ट रूल, और इसका सेम सिंपल नेम है u इंटू वी, जो कि हम लोग बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल मीन्स u इंटू वी। u इंटू वी मीन्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई वे, u सेम v डेरिवेटिव प्लस v सेम u डेरिवेटिव। आई रिपीट, u सेम v डेरिवेटिव प्लस v सेम u डेरिवेटिव। नाउ लुक एट दिस, u सेम v डेरिवेटिव, ऑपरेटर लग गया v के ऊपर, प्लस v सेम u डेरिवेटिव। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। नाउ क्वोशंट रूल, u अपॉन v। u अपॉन v means that you have to apply the derivative of u upon v, and how we can say v square, v same u derivative minus u same v derivative. I again say v square in the denominator, okay, v square in the denominator, v same u derivative minus u same v derivative, like this thing, v square in the denominator, v same u derivative, operator लगा हुआ है, minus u same v derivative. There are some rules or as well, that constant derivative is always equal to 0. Remember, constant derivative is always equal to 0. And constant multiple rule, I again just writing that if coefficients are there, then coefficient should be outside of the operator. Now I just formally start exercise 2.3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमें डिफरेंशिएट करना है इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट स्टेप इज लेट y इज इक्वल टू द क्वोशंट, y इज इक्वल टू क्वोशंट, ओके।
Differentiate with respect to x means d upon dx. Differentiate with respect to x means d upon dx. Differentiate with respect to t means d upon dt. Differentiate with respect to pen is d upon d pen. Differentiate with respect to Sir Mansoor is d upon d Sir Mansoor. I hope you understand. Differentiate with respect to x means dy upon dx. Okay. Operator I apply operator on both side. इधर भी ऑपरेटर लग गया, ये आ गया ऑपरेटर, एंड इधर भी ऑपरेटर लग गया. ठीक है. नाउ दिस ऑपरेटर इज अप्लाइंग बाय द फॉर्मूला. इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, लग गया तीनों पे. नाउ 2 इज द कोफिशिएंट, सो दैट्स व्हाई आई टेक इट आउटसाइड. ओके. नाउ rule is algebraic power rule is there should be 3 work. First you should just take the power in the denominator as coefficient and then decrease the power from the function. Okay. And derivative with respect to x. So x derivative with respect to x means dx upon dx, that is 1, so I didn't write it. Okay. Now 2 is coefficient, again the same thing, power rule we can apply because operator is there. 3 is the coefficient. Okay, 3 minus 1, why? Because x raised to the power 3 minus 1, I just apply the formula. And again the same thing here. 2 is the I just take the power as the coefficient and decrease the power, and then derivative of x with respect to x, 1 I didn't write. Okay, so 4 minus 1 3, 4x cube, 3 minus 1 2, 6x square 2x. So what is the derivative of this? By I didn't apply the first principle method. Okay, so I didn't apply the first principle. By the formulas, how you can get it? If you just x to the power 4, 4x cube, 2 3 the 6x square, 2x. So this is the answer. And in question number 2 you can see that this is the question. So let y is equal to this complete question, differentiate with respect to x. So y पे dy और d upon dx लग जाएगा, इधर भी d upon dx लग जाएगा. So dy upon dx is same. Now operator should be shifted to the all terms. Again the same thing, 2 is coefficient outside the bracket. Okay. Now पहले पावर उतरेगी, पावर उतारी, पावर में एक कम करना है. ओके. एंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, जो कि हम लिखते नहीं है. ठीक है. नाउ 2 इज सेम, अगेन पावर उतारी, पावर में एक कम करना है, डेरिवेटिव अंडर द पावर x का डेरिवेटिव 1, जो कि हमने लिखा नहीं. कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने पहले बताया कि इसके बराबर होता है 0 के. -3 x रेज़ टू द पावर -3 -1 -4. ओके. 2 से 2 कैन बी कैंसिल, so plus minus minus 3, x minus 3 upon 2 minus 1 is minus 5 upon 2, or we can write minus 3 1 upon x to the power 4. If I want to write the positive powers, 1 upon x to the power 4 and x to the power 5 by 2. This is the second question answer. Now this is from outside from the book, extra question I can say, and quotient rule we have to apply. So that's why I write another extra question, because quotient rule first time we are applying, so extra question I am doing for all of you. Now for example, there is a function, algebraic function, that is in the numerator and denominator as well. So rational function is there. So 5x minus 2 upon x square plus 1. Okay. So this is called u and this is called v. U, v. What is the formula? U upon v formula is v square, v same, derivative of u minus u same, derivative of v. Okay, now this is v square, v same. Okay. Applying the operator, derivative of u minus u same, derivative of v. Okay, just I put the formula like this. Okay, देखो इसके आगे ऑपरेटर नहीं लगा हुआ तो इसको डेरिवेटिव नहीं करना है, इसके आगे ऑपरेटर लगा हुआ है तो इसको डेरिवेटिव करना है. ओके. सो 5x का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना 5 होगा, 4x का 4, 2x का 2, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0.
So 5x minus 2 derivative is only 5. Okay, minus is same, 5x minus 2 is same, 2 d upon dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर उतरेगी फिर पावर में एक कम हो जाएगा, तो 2x इज द आंसर ऑफ दिस डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव 0. सो दिस इज द थिंग. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 5 द 10x and the answer is this. Okay, I said it earlier, this is the extra question, it is not from your book, but after this I'll solve from your book question, so it will be easy for all of you. Okay, now question number 3, you can see that let y is equal to a plus x upon a minus x. This is called shabash u, this is called v. What is the formula? V square in the denominator, v same, v square in the denominator, v same, u derivative minus u same, v derivative. I hope you understand. Okay, now इसमें ऑपरेटर नहीं लगा हुआ तो ये एज इट इज आएगा, इसमें ऑपरेटर लगा हुआ है. ठीक है, a is the constant, so what is the constant derivative? 0. and x का डेरिवेटिव x के लिहाज से dx अपॉन dx 1. ठीक है, अभी यहाँ पे टर्म में है, मल्टीपल में नहीं, दैट्स व्हाई आई राइट इट. माइनस इज सेम, a प्लस एक्स इज सेम बिकॉज इसके आगे डेरिवेटिव का ऑपरेटर नहीं है. सो d अपॉन डी एक्स, a का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1. ओके, एंड द डिनोमिनेटर इज सेम. 0 प्लस 1 इज 1 and 0 minus 1 is minus 1. So minus minus plus. So I can cancel minus x plus x. So a plus a 2a, and this is the answer of question 3. Now question number 4, again because the extra question help you a lot. U upon v is u upon v nazar aa raha hai. V square, v same, u derivative minus u same, v derivative. Again the same procedure that I did it in question number 3. You can see same procedure, same scenario that I apply in question number 3 and in extra question. Now question number 5, two brackets are multiply. So first we multiply, so this is the polynomial. Okay, the degree of the polynomial is 2. So y is equal to minus x square plus 8x minus 15. Now I can take the derivative. Okay, so with derivative with respect to x, dy upon dx, dy upon dx, and it should be multiplied with the all terms. Minus x square, minus is same, x square का derivative हमेशा क्या होता है? 2x, 2x like this. x square का derivative क्या होता है? 2x. कैसे होता है? पहले पावर उतरेगी, उतर गई, पावर में एक कम होता है, and derivative of under the power. dx upon dx, what is the derivative? dx upon dx 1. Okay, constant का derivative हमेशा 0. So minus 2, 2 minus 1 is 1, minus 2x plus 8 is the answer of question number 5. Now question number 6, y is equal to this whole square. So first I apply the formula a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab, square से root cancel, plus x square से root cancel 1 upon x, and root x multiplied by 1 upon root x, we can cancel out these things. So minus 2 is only remain. Can I write 1 upon x is x raised to the power minus 1? So can I apply power rule of the derivative. Okay, now differentiate with respect to x, x का derivative with respect to x, and d upon dx, x raised to the power minus 1 and minus 2. ठीक है, so what is the answer of this? Yes, 1. What is the answer of this? Power rule apply करेंगे, dx upon dx का आंसर 1 आएगा, इसमें पावर रूल लगेगा क्योंकि ये माइनस 1 पावर दी हुई है, पहले पावर उतरेगी, पावर में कम होगा और डेरिवेटिव अंडर दी पावर वो जो कि 1 होगा, जो कि हम लिखेंगे. ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस x रेज़ टू द पावर माइनस 2, और आई कैन राइट 1 minus 1 upon x square. If I take the LCM, x square minus 1 upon x square, this is the answer of question number 6. Now question number 7. First of all, we just simplify the function, multiply the two brackets. Okay, this multiply by this, okay, and this multiply by this. So
The answer is this, and then you apply the derivative formula. Okay. Okay, for the question number 8, again u upon v is there, v square, v same, u derivative minus u same, v derivative. Okay, this is same. Power rule is we have to apply. पहले पावर उतरेगी, पावर में कम, एंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर. पावर के अंडर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर. मैंने कहा था ना 3 काम करने. देखो पहले पावर उतरी, पावर में कम किया, एंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर, 3 काम हो गए. माइनस, इसमें ऑपरेटर नहीं लगा हुआ तो एज इट इज आ गया. एस स्क्वायर का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, जो कि हम नहीं लिखा क्योंकि ऐसा ऐसा डेरिवेटिव में हम आगे बढ़ रहे हैं. नाउ दिस इज द सेम थिंग. 2 - 1 is 1. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, जो कि नहीं लिखेंगे, माइनस. दिस इज सेम. नाउ एक्स स्क्वायर minus 1, okay, and x square plus 1. Okay, now can I take the common 2x and x square plus 1? Okay, I took the common 2x x square plus 1 from this term, these two terms. Okay, so what is remaining? 2x square minus 1 is remaining, and minus 1 power is common, so क्या बचेगा, x square plus 1 की 1 पावर बचेगी, and the denominator is same. This is same. 2x square minus 2 minus x square minus 1. Now again the same thing. Now 2x square minus x square minus 2 minus 1 minus 3, and again the same thing. This is the simplified form of the question number 8. I am live through WhatsApp group, so you can ask any question regarding this presentation, this lecture in your math period. Thank you for your attention, because first slide was all about the attention. I hope you learn question number 1 to question number 8.